So in yesterday's lecture, we have already covered some basics of C, that uh, beginning of C, C is a structured language and all other things. So this time I'm showing you, and I had already shown you that it is developed from BCPL, and BCPL was developed by whom? किसने डेवलप किया था BCPL? मार्टिन रिचर्ड ने, ये मैंने नहीं बताया था आप लोग को। और बी लैंग्वेज डेवलप की थी केन थॉमसन ने। ओके, और एक सेकेंड, सो बी लैंग्वेज डेवलप की थी केन थॉमसन ने, और केन थॉमसन, BCPL, इन सब को मिला के बेल लैबोरेटरीज में हमने जो डेवलप की वो लैंग्वेज थी सी लैंग्वेज। ओके, नाउ come to this place. The whole screen is visible or presenter's view is visible? Sir, whole screen. Whole screen means C is a middle level language. Yes, sir. Only one screen is coming to you, na? Yes, sir. Okay. So let me show you. C is a middle level language. So why it is middle level language? Because it is high level language. High level language means we have 32 keywords. Okay. And these are more or less very similar to user understandable. Okay. Plus, it uses power of assembly language. Assembly language, I already told you that it is based on processor. Okay, processor architecture. Like हिंदी लैंग्वेज जो बोली जाती है, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बोली जाती है। लैंग्वेज सेम है ना? जैसे राजस्थान में अलग बोली जाती है, राजस्थान में भी दो अलग अलग एरिया है। जैसे चंबल के आसपास वाले अलग किस्म की हिंदी बोलते हैं, एंड other places also they have different kind of Hindi, so accent is different. So because of their assembly, their way of talking, so it depends. Similarly, for Intel processor, everything is written like means whatever you want to write, everything is written in the same way, but only means compilation process will be changed. Okay, so high level language plus assembly level language will introduces you the concept of C language. Then application areas of C. So this is a system program, forms a portion of operating system of computer or its support utility. Operating system, interpreters, editors, assembly programs are usually called the system programs. Okay, so yesterday in programming, I think I had shown you program. In C batch, I had shown one program which shows ls minus l. पूरी की पूरी directory listing बताई थी कल. Sir, you have shown the programming of some formulas like PVNRT and Okay. Celsius and Fahrenheit. Okay, so let me show you one program. Fine. Let me show you one program. The means what is written here: operating system, interpreters, editors, assembly programs are usually called system program. And for this purpose, we use C language. Okay, the Unix operating system was developed using C language. There are C compilers available for almost all type of PC. Okay, almost all type of PC means मैंने आप लोगों को Ubuntu में बता दिया C प्रोग्राम करके. अब मैं आप लोगों को C प्रोग्राम लिख के बताता हूँ Mac में. Okay, so let me show you in Mac also. So here is my Mac operating system. Fine. And clear. Okay. So this Mac is not visible to you, I think. Let me. Yeah. Now Mac operating system is in front of you. I'm going to write a very simple program. Okay. Why I am showing Mac? It means because you know the capability of C language,
the same program can be runnable over different places. So let me show one program. This is your hello.c. Okay, hello.c. I had written cat command. Cat command will show simply the program. So here you can see include stdio.h. Let me clear the screen, and then cat hello.c. Now it is visible. So include stdio.h, integer main, printf, /n hello world, /n return 0. Only these things we have written in our Ubuntu program also. Agree or not? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, the same procedure we follow, like cc followed by hello dot c followed by -o followed by hello. यही लिखते थे हम कंपाइल करने के लिए. इसके बाद ये प्रोग्राम कंपाइल होता था, फिर ./hello लिखा और ये हमको हेलो वर्ल्ड नाम का आउटपुट देता था. क्लियर? अब ये तो एक सिंपल सा प्रोग्राम हुआ, लेकिन आप सोचो कि एक और सिंपल प्रोग्राम ऐसा है जिसको आप लिखोगे ना तो आप आज की डेट बता सकते हो. दूसरा, आप यदि उस प्रोग्राम को लिखोगे तो आप इस डायरेक्टरी के अंदर, जैसे ls कमांड आपने दी, ये पूरी की पूरी जो डायरेक्टरी कंटेंट आया है ना, आप सिर्फ सी के प्रोग्राम से भी कर सकते हो. तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको याद रहता तो अच्छी बात है, नहीं रहता तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको लेके पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है और आप इसके बाद ना बहुत सारी चीजें कर पाओगे, बहुत ज्यादा चीजें. So let me show you that program. vi and sys pro dot c, syspro.c. Okay, so include stdio.h, then include stdlib.c. This is one more file to run your system program. Okay, initially we start with integer main, no problem. We always start with integer main or void main. Okay, then followed by one command you need to write, and that command is system. Inside that, just write in double quote ls. Okay, and then put semicolon here, then return 0, and let us write one more thing, ls minus l. Now it is much better, and then enter and put this. So how many lines are there in this program? Only 2 lines are there, system and return. Even return cannot be counted as a line. Okay, or one more include file is there. Now see the beauty of this program, you can write system program. Okay, so this is a system program, and let me compile this program by using cc sysprog.c -o sysprog.c, not .c. Okay, so no such file or directory. sysprg है क्या? Oh, syspro, not prog. Fine. So this says that one error generated, stdlib.c is not found. Okay, so this is one error. In some other program it works well. Okay, stdlib.c not found. 1 second, give me 1 second, because stdlib dot okay, what is the problem here? I need to write, because it is header file and I had written C.
Okay, so let me modify this. Now it is perfect. Escape colon WQ and clear the screen, and let me compile this program. So this is compiled without any error. See what is the output. Only one line has written, and you can see the beauty of this program that I'm typing SYSPRO. So this is the output. समझ में आया आपको आउटपुट? केवल Sir, आपने यस No, sir. this is the time you have visited the desktop documents. ये स्क्रीन तो विजिबल है ना, ये ऑपरेटिंग Yes, sir. सिस्टम। Yes, sir. तो इसमें क्या चीज विजिबल नहीं हो रहा आपको? No, sir. I am asking that जो output आया ना वो ये टाइम बता रहा है जब आपने विजिट किया था डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स एंड डाउनलोड्स एंड लाइब्रेरी। हाँ, ये तो आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, यस सर। पिछले बार मैंने ऐसा दिखाया था, आप कह रहे हो कि ऐसा देखना आउटपुट। नो सर, मैं कह रही हूँ कि ये आउटपुट ये दिखाना चाह रहा है क्या कि आपने इस पे विजिट किया था इनको? नहीं नहीं नहीं, ये आउटपुट आपको ये दिखा रहा है कि ये सारी डायरेक्टरीज जो है वो करंट फोल्डर के अंदर है। जैसे हम लोग dir कमांड लिखते हैं ना विंडोज में, तो यहाँ पर होती है ls कमांड। ls कमांड पे आप देख रहे हो cd डेस्कटॉप लाइब्रेरी, ये सारी चीजें, और हेलो नाम का एक प्रोग्राम भी लिखा हुआ है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा है। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम किस टाइप के हैं, ठीक है, इनका कितना साइज है, वो सारी चीजें यहाँ पर है। अब सपोज आप सिर्फ हेलो नाम की चीजों को भर देखना चाहते हो, या ऑल द प्रोग्राम सी प्रोग्राम, ठीक है, सपोज आप सिर्फ, या एक काम करते हैं हम सिर्फ हेलो नाम की चीजों को देखते हैं। सो लेट मी राइट प्रोग्राम फॉर दिस पर्पज। सो दिस इज द प्रोग्राम। सो व्हाइल राइटिंग दिस ls minus l followed by okay, followed by just type he star. Okay, so it will automatically search all the patterns related with he. Okay, escape colon wq. Now it will show only for hello world। hello और hello world दो प्रोग्राम हमने बनाए हैं, वो सारे दिखेंगे। ये तो कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद हमको रन करवाना है। ये रन हो गया, दिखा आपको दो चीजें, हेलो और हेलो डॉट सी। यस सर। और ये अभी हमने बनाया, थोड़ी देर पहले बनाया, अक्टूबर 8 को ही बनाया हुआ है ना। यस सर। ये एक्चुअली डेट जो है अक्टूबर 8 क्यों आ रही है, लेकिन आज तो थर्सडे नहीं है, आज है मे बी ड्यू टू जोन। जस्ट 1 सेकेंड। टाइम जोन इज इंडियन and it has selected okay. Now let us run once again, so it will give you sahi correct output. Now it is coming October 9, fine. Yes sir. Yes And sir. time is also changed. In above output the time is evening 20:57 and 12:24. Okay, and now Yes, sir. here it shows 9:27 and 00:54. Okay, so got it or not? Yes sir. So this is the powerfulness of what C program. तो मैंने केवल एक प्रोग्राम बताया, इस प्रोग्राम में आपने क्या लिखा, केवल केवल आपने ls-l, और सोचो कि और इससे भी सिंपल प्रोग्राम भी मैं बना सकता हूँ। सिर्फ आप डेट देखना चाहते हो ना, तो यू कैन सी द डेट ऑल्सो।
date. Fine. Now don't see the date. See the calendar directly. Okay. In C program, no book show you this type of program. Okay. देखा आपको कैलेंडर? Yes, आपने sir. सिर्फ कैल टाइप किया और कैल टाइप करने के बाद आपको कैलेंडर दिखाई देने लगा, है ना? ये सारे प्रोग्राम जो ओरिजिनल सी लैंग्वेज है, जो जिसके लिए लाइनक्स और यूनिक्स के लिए बनी है, वहां पर रन होंगे, लेकिन आप यदि टर्बो सी में रन करवाओगे तो ये रन नहीं होंगे। क्लियर है? Okay, sir. हाँ. तो एक छोटा सा, बस आप ये प्रोग्राम चाहो तो नोट कर लो, ताकि आप इसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सको इसके साथ, है ना? सो दिस इज द प्रोग्राम. Only you need to put the things inside double quote. सर प्रोग्राम ये कहाँ पे नहीं चलेगा? ये आपके विंडोज पे नहीं चलेगा। ओके सर. ये सिर्फ उबंटू या जो भी लाइनक्स बेस्ड सिस्टम है उन सब पे चलेगा। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर. सर तो जो कंपनीज जो होती है वो इस पर नहीं बनाती ना? इस पर नहीं बनाती मतलब? सर मतलब जो उनके कस्टमर्स होंगे वो विंडोज और ये मैक दोनों वापरने वाले होंगे वो। अब मैक मैंने इसलिए रखा है कि आप में से बहुत सारे लोग मैक कर रहे थे, है ना? तो मुझे यहाँ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम रखना पड़ा, अदरवाइज उबंटू इज सफिशिएंट। सो जो देखिए मैक के लिए सारी एप्लीकेशंस बनती है, सारी एप्लीकेशंस उबंटू के लिए कुछ कम बनती है और सबसे ज़्यादा बनती विंडोज़ के लिए, क्योंकि मैक्सिमम पर्सन्स जो है वो विंडोज़ में कंफर्टेबल होते हैं। अब जिनको स्टेटस शो करना है वो स्टेटस के नाम से क्या करते हैं कि एप्पल खरीदते हैं, और एप्पल खरीदते हैं तो उसके बाद फिर एप्पल के हिसाब से सारे के सारे सॉफ्टवेयर उनको यूज करने पड़ते हैं। क्लियर? यस। ओके, सो लेट मी स्टार्ट वंस अगेन विद पावर पॉइंट। लिख लिया था ना प्रोग्राम महिमा? यस सर. Okay. So these are the application areas. I had shown you practically that operating system, interpreters, editors, assembly program. So how do we write system program? The unit was developed using C only, and there are C compilers available for almost all type of PCs. So I had also shown you using Apple, okay, Mac. Yes. आपने देख ही लिया, मैक पे भी मैंने काम करके आपको दिखा दिया है। फाइन। CentOS view and then so C is a structured language. What do you mean by structured language? C allows compartmentalization of code and data. Means multiple compartments are there. It refers to the ability to section off and hide all information and instructions necessary to perform a specific task from the rest of the program. Okay, so like I will show you do will be coming, do loop is there. Do I equals to I plus 1, then while I is less than 40. It means this loop is structured, written structured, means with a compartment. Only this belongs to do. Okay, this portion belongs to do. So this is how one can write the code. Code can be compartmentalized in C using functions or code blocks. Different. So this is code block actually. This is our code block. Okay, if we write function, suppose one function is there. If I am going to write add, okay, so this is a function, and again this is compartmentalized by using this function. So this is a structure, means it follows dedicated structure. It is not following anything wherever you want to do.
So this is structure. Now, important thing that how many colors are there, not colors, how many keywords are there. So C has 32 keywords. Fine. These keywords combined in formal syntax from a C language. Okay. Rules to be followed for all programs written in C language. Like all keywords are lower case. सबसे बड़ी बात यह है कि C प्रोग्राम में सारे के सारे लोअर केस में ही कीवर्ड लिखे हुए हैं. सेकेंड थिंग, C इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. सो इसका मतलब यह है कि यदि आपने डू वाइल ऐसे लिखा है और ऐसे लिखा है तो इट डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन सिस्टम, बट इट डेफिनेटली गिव्स यू सर्टेन इम्पैक्ट. मतलब दिस इज करेक्ट थिंग एंड दिस इज रॉन्ग थिंग. फाइन. नाउ कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल और फंक्शन. तो सपोज आप यदि इंटीजर यूज करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो मान लो वाइल, तो मैंने बोला इंटीजर वाइल लिख लेता हूँ. ओके, so this will generate an error. So you cannot use, and obviously you cannot use the reserved word as function name or variable name. So this is the whole structure of program. Initially we start with main, followed by curly brace and then curly brace, and this is a simple program. Integer I equals to 0, I equals to I plus 1, only statements are given. Okay, so this is the structure of program. Main. So C programs are divided into units called function. Irrespective of number of functions in a program, the operating system always passes control to main. Okay, without main you won't be able to do anything. Fine. Main is very important consideration when C program is executed. The function name is always followed by parenthesis. Okay, the function name is always followed by parenthesis. The parenthesis may or may not contain parameters. Means like addition of two number. Addition of two number, you require I and j. Two numbers are required to define this function. Or suppose main function you are writing, so it is without parameters also. So these things which we are passing is known as parameters. Okay. Delimiters. Now, if you are writing program, सर yes, सर अगर मेन में पैरामीटर नहीं लिखेंगे तो फिर कहाँ लिखते हैं पैरामीटर? पैरामीटर जो फंक्शन रहेगा वहां लिखेंगे ना. तो सर ये मेन में मतलब खाली रहेगा? मेन तो हम खाली पैरेंथेसिस ही रखते हैं. देखो मेन में जो हम पैरामीटर्स वाला प्रोग्राम है ना वो आगे बनाएंगे. ओके. ओके सर, ओके. Like add two number. So at least one must know the number A or B. Okay. So these parameters and written inside the curly braces. Okay. So this is delimiter. The function definition is followed by open curly brace. This curly brace signals the beginning of function. Okay. This will signal the beginning of function. Similarly, a curly brace, closing curly brace after the code in the function indicates the end of function. This indicates the end of function or block. Yes. Statement terminator. So each and every statement is terminated by semicolon. Okay. A statement in C is terminated with a semicolon. A carrier's return white space or tab is not understood by the C compiler. So these are the special characters actually, means white space. If suppose I had written a statement, one statement is there, statement 1, followed by carrier's return or something, and even spaces are there, but semicolon is there, then this statement will be read by a C compiler effectively. The statement that does not end in a semicolon is treated as an erroneous line of code in C. Statement, okay, this is talking about a statement, not about for loops and branches. No semicolon is required. If you use semicolon, its meaning is different. Okay.
So this is very important thing. Then comment line. If you want to write a comment, then comment are usually written between this forward slash followed by star, okay, and this backward slash follow star followed by backwards forward slash. So inside that, whatever written is this, it is treated as comments. So comments are usually written to describe the task of a particular command, function, or an entire program. The compiler ignores them. In C, comment begin with the forward star and terminated with star forward slash. In case of comments contain multiple lines. So this is multiple line comment actually. Multiple line comment. Fine. There are single line comments also. So this is always 2 number of forward slashes. Now come to C library. Yes. सर कमेंट क्या करता है? Comment actually, suppose if you write a program, okay, if you have written a program like addition of 2 number, or who is the inventor of this program, who has developed the program, so you need to write name, okay, name Mahima, aim, abhi star forward slash star hai, then aim to add 2 numbers, okay, date, जो भी आपने डेट डाल दी, और इसके बाद आपने लगाया स्टार और स्लैश. तो जब भी आप इस प्रोग्राम को ओपन करोगे इस लाइन से आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोग्राम किसके लिए है, क्योंकि आप प्रोग्रामर हो, ठीक है, आप प्रोग्रामर हो. सिस्टम को इससे कोई मतलब नहीं, सिस्टम तो केवल एग्जीक्यूटेबल देगा, लेकिन प्रोग्रामर होने के नाते आपके पास ये सारी चीजें रहेगी. तो आप उस प्रोग्राम में यदि कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन यू कैन मॉडिफाई योर प्रोग्राम. ओके, एनी डाउट? अरे कमेंट आउटपुट पर नहीं आते ना? कमेंट बिल्कुल आउटपुट में नहीं आता. इट इज नॉट रीड बाय द कंपाइलर. It will be ignored simply. Okay, fine. Comment is for programmer only. It does not have any impact like on signing something. huh? Like signing something. Next. No sir, I'm saying जैसे हम साइन करते हैं ना किसी चीज पे, ऐसा है क्या? Actually your voice is कोई काम fluctuating. करने हाँ, आप सर जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए है ना वो. एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए देखिए, मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया है ना, बहुत बड़ा प्रोग्राम. अभी तो हम केवल हेलो वर्ल्ड तक देख रहे तो हमको तो बहुत समझ में नहीं आ रही बातें. मैंने एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम लिखा, मैं मर गया. अब कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी तो ये कमेंट के सहारे ही जो दूसरा प्रोग्रामर होगा उस प्रोग्राम को देखेगा, एंड बेस्ड ऑन दीज कमेंट्स he or she will be able to modify the program. Correct? ठीक है, सिंपल सी बात है. Yes sir. यस सर. Yes Okay. sir. So C library. All compilers comes with the standard library of function. So we have seen that when we type stdio.h it is okay, but stdlib.c it is not okay. Actually these are the header files, so we need to be careful about what is written here. So these are the library and provided with the standard means these files are existing. Okay. Now come to a function written by a programmer can be placed in the library and used when it is required. So we can develop our own header file. Some compilers allow function to be added in the standard library. तो कुछ compiler ऐसे होते हैं जो standard, actually non-standard library or standard library. If we write inside curly braces, it means ये standard library है. Okay. If we are using double quote for this, include statement, if okay, if include is written for like this and if include is written like this, both has different meaning. It means standard library, it means non-standard library. Okay. Some
compilers require a separate library to be created. Okay, so it depends कि आप किस तरह से क्या करना चाहते हो. It is up to you. Now, compiling and running a program. This is the process how to compile and run the program. Include file is there. Source file is always written. Okay. Before this source file, we will include certain line. Okay. We will need to include certain line, and that is most of the time only stdio.h is included. So this includes file will be already there. Okay, it is not compiled, it is pre-compiled header file. It is pre-compiled header file. Okay, and this is also known as pre-processor directive. What we need, what we know, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम, प्री प्रोसेसर directive. Fine. It means before compiler it will be added. Fine. After that some library files are there. These are included. Okay. What is the work of compiler? Compiler simply compiles the program into object code. Compiler, whenever source.c is written, or don't write source.c. Let us give a meaningful name. Fine. So suppose the name of file is hello.c. This is our source file. After compilation, it will become hello.obj. And this is not visible to all. Okay. This hello.obj with library file and linker, other user generated object file. Okay. And loader also. Loader is also input there. But because you don't have any idea about loader, so that just think about linker. So it links the library, it loads the library, it links the other library or object file, and all together integrated. Okay, these all together integrated in a common file. Okay, integrated in a common file, and this will become executable file. So this is your hello.exe in case of Windows, or ./hello in case of Linux and other variant. Clear? Any doubt? तो जब हम किसी प्रोग्राम को रन करवा रहे हैं, मतलब कंपाइल करवा रहे हैं, और कंपाइल करने के पहले कोई सिंटेक्स यदि गड़बड़ होता है, तो यहाँ पर जो आने वाली एरर होती है, दिस एरर इज नोन एज कंपाइल टाइम एरर. यदि आपने कोई लिंकिंग लाइब्रेरी गलत दे दी, ओके, तो जो यहाँ पर एरर आएगी इस जगह पे ऑब्जेक्ट फाइल और ये पूरे प्लेसेस पे ये एरर कहलाएगी, ये इस जगह पे जनरेट होगी. दिस एरर इज नोन एज लिंकिंग एरर, लिंकिंग और लिंकर एरर. Okay, if you write a program correctly, if you execute it, but after running this program gives some error. Okay, input A and B is okay, whatever input you have, but suppose consider a program like this. Okay, if you give A as 5 and B as 0, then it will generate an error, and this error is known as divide by 0 error. And this time this error is known as run time error. तो कितने तरह की एरर पता लग गई आप लोगों को? कंपाइल टाइम एरर, लिंकर एरर, और जो थर्ड है वो रन टाइम एरर. तो अलग अलग फेजेस में अलग अलग एरर्स आप लोगों को मिलेगी. क्लियर? यहाँ कोई डाउट है? Yes. No, sir. So modifiers used with basic data type. Modifiers जो भी हम यूज कर रहे हैं, it is used with so what is modifier? Modifier is used to alter the meaning of base type to fit various situations more precisely. आपने इंटीजर ले लिया, पता लगा कि नहीं इसको फ्लोट करना था, तो आप उसको फ्लोट कर दोगे, है ना? तो ये मॉडिफायर है, एक्सेस मॉडिफायर जिसको हम बोलते हैं.
So except for the void. Void is also, void means no type. If no type is there, so how do you modify? This is no type. Okay. Then integer, float, character, double, these are all access variable. So the basic data types can have various modifier preceding them. Modifiers used with C are signed, unsigned, long, and short. Actually, these are the modifier. These are the data types. Mainly, these are the data type, and we modify this like signed integer. Okay, unsigned integer like this. So we modify. So what are the data types which is coming under modifier? So these are the signed, unsigned, long, and short. All of these can be applied to character and integer data type. The long modifier can also apply to double. Fine. Double is also there. Double भी data type आप लोगों को पता ही है ना? So this also completes. So modifiers used with basic data type. So we will see one table also. Here the basic data types available in C are character, integer, float, double and void. Modifier is used to alter the meaning of program. बता ही दिया, ये तो पूरा बता ही दिया मैंने. Now come to this. Approximate size in bit. So 8-bit. This is of 8-bit size. This is of 8. Sign character is 8-bit. Integer is 16-bit. Nowadays, it was traditional compiler. It is 32-bit. Okay. Unsigned integer is 32-bit. Signed integer is 32-bit. Short integer is 16-bit. Okay. And unsigned short integer is 8-bit. So forget about this. All things written here. New data types are also available, or you can write this. So because it is traditional compiler, so with this you can also say that what is the range. So when I am going to explain you about range, then only this will come. This screen is visible now? Yes, sir. Okay. Because here red line is not coming, that's why I'm asking. So whenever I'm going with number system, once again, number system, then I will show you the importance of these numbers. Fine. Identifier names. The name of variable, function, labels, and various other user-defined objects are called identifier. So there are some important or correct identifier names like arena, s underscore count, marks and 40, class underscore 1. Okay, these are the correct. And one more you need to include is, actually it has not included all. So let me include one more, like underscore some, underscore arena. Okay, these are also correct, but erroneous. If we start with any number, or if we use it with any symbol, then it is incorrect. Okay, so ये तो यहाँ hide हो गया है, like 1ASTT, then arena dot has different meaning. Okay, similarly ram exclamation. Then if we want to write a dot 9, a1 to 9, so these all are incorrect identifier. The number of characters in the variable that are recognized differs from compiler to compiler. Most of the time in traditional compiler, it is 8 character flexibility. Up to 8 character you can create the variable name. An identifier cannot be same as keyword. Okay.
So now come to variables. Variables are named location. What is this? Named location. Named location means inside memory. Memory is actually a place where 1, 2, 3, 4 locations are there. But whenever we are going to create a variable like a, so it will automatically assign to a particular location. It is not always the case that this will be start from 1, 2, 3, 4, maybe 78, 79, 32, 42, like this. The syntax for declaring a variable is data type followed by the identifier name. Okay, this is the syntax. Okay, don't create a space here. Fine. So examples are integer abc comma xyz. So there are two variables positioned in memory. Suppose this is the memory stack. So and memory will start from 89, 90, 91, 92, 93, 94. So one of the space is allocated to ABC and other space, because suppose it is 2 byte long, then next will be XYZ. I will show how. Then long integer I is given to this number and J will lie somewhere here. Okay, depending on the size of data. So I will show you to get these numbers. Okay. Or let us write one program to show you how these memory locations are there. आप बताइए. आप देखना चाहते हैं कि मेमोरी में किस जगह पे स्टोर रहता है? Yes, sir. ओके, आपको प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ प्रोग्राम लिख के बताऊंगा. मतलब उसकी जैसे अगली फेज पे मत जाइएगा, अगली फेज आप लोगों को समझ में आ जाएगा बाद में, वो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू लॉट. फाइन. सो unshare and then share operating system. Where is my operating system? This is my. Now let me write one program by name location. Location.c. Fine. So include stdio.h, stdio.h, then integer main, then left curly brace, then integer a, b, c and d. Okay, and I will print addition of all these numbers and I will show you the spaces. Printf enter a, b, c and d. Okay, I am not going to add. Fine. Or better to go for add. Yes, let me add one more variable, integer sum. So you can see all the variables there, and oh, this must be semicolon and scanf double code, because we are entering 4 number. So %d, %d, %d and %d, followed by comma a, comma b, comma c, comma d. Okay, but this will not read. It will automatically give you segmentation fault. So better to write address of a, address of b, address of c and address of d, followed by semicolon. Then sum equals to a plus b plus c plus d. Fine. Printf sum equals to %d, sum equals to %d, comma
Sum. Up to this part, you understand that this program is very simple. It is accepting the number from user and it will show the summation of all. Let me write and let me show you the addresses of each number. And please note down last 2 digits. Okay. So printf double quote slash n before slash n, and I am writing address of A is % x, %x, I think %x is there, and followed by comma address of A. Okay, then print. Let me run this program first. Return 0. So this is a simple program. cc loc.c minus o loc. Okay, so there is a warning generated address is, but argument has type integer. Let me see the output dot slash loc. So it will say that enter 2, 3, 4 and 5, and the output is sum is 14 and address of A is EF117B88. Some special kind of number will be coming here. Okay, so this number is address, and let me write the program completely. We have 8 more minutes, so we can do this very easily. One important thing is put the slash n here, because slash n, insert and slash n. So address of A. Now come to address of printf address of B is so this is complete program. Okay, it will display the address, and please write down the last 2 digits. Five warnings are there, not an issue. Dot slash loc. So it is asking for number 3, 4, 5 and 6. Sum is 18, and now you can see that after 88 is there is 84. Okay,
and then 80 and then 7C and then 78. So it follows the stack organization. Stack organization means see here you can see आप लोगों ने लिख लिया 88, 84, 80 और 7C और 78. लिखा? यस सर। अब आप देखिए सम का एड्रेस क्या दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है। 78 में आप 4 ऐड कीजिए, क्या आएगा? 78 प्लस 4 इक्वल्स टू क्या आएगा? 79, 80, 81, 82। लेकिन ऐसा नहीं आ रहा। 78 के बाद आया 79, 79 के बाद आएगा 7A, 7B और 7C। ओके, सो दिस इज 78 plus 79, 7A, 7B and 7C. So 78 plus 4 करने पर आपके पास क्या आएगा? मैं लिख देता हूँ 79 एक इंक्रीमेंट, 7A दूसरा इंक्रीमेंट, हेक्साडेसिमल नंबर है, हाँ। तीसरा इंक्रीमेंट है 7B और चौथा इंक्रीमेंट हुआ 7C। तो आप देख रहे हो एड्रेस ऑफ D is 7C. Now come to next number. After 7C, 7D will come, 7D, फिर 7E, फिर 7F और फिर उसके बाद आ गया 80। तो अगला नंबर आप देख रहे हो 80 आ रहा है। एग्री और नॉट? इसका मतलब ये है कि इंटीजर टेक्स 4 बाइट ऑफ स्पेस। आफ्टर दैट 84 इज कमिंग, आफ्टर दैट 88 इज कमिंग। कोई डाउट है इसमें स्टोरेज लोकेशन में? सर हाउ मेनी बाइट इट टेक्स? 4। एक बाइट का एक स्पेस। ओके, तो आप 4 बाइट के 4 स्पेसेस के हिसाब से आप खुद ही देख लो। मैंने कहीं पर कोई नंबर ऐड नहीं किया, मैंने जो नंबर ऐड किया वो 4, 5, 6 है, 3, 4, 5, 6 है ना। तो वो 3, 4, 5, 6 अलग चीज है और जो वैल्यू स्टोर हुई है किसी एड्रेस पे वो अलग है। और वो एड्रेस आप देख सकते हो, लोकेशन आप देख सकते हो। लोकेशन आपको क्लियर कट समझ में आ रही है कि जो सबसे लास्ट वेरिएबल है वो टॉप पे है, इसको बोलते हैं स्टैक। जो सबसे पहले आएगा वो सबसे नीचे जाएगा, जो सबसे बाद में आएगा वो सबसे टॉप पे आएगा। सबसे बाद में सम आ रहा है तो सबसे ऊपर वो जा रहा है। क्लियर? यस सर। तो आप ये प्रोग्राम बनाना चाहते हो, चेक करना चाहते हो और भी वेरिएबल ऐड करके? यस सर। तो आप इसको घर में जाके चेक कर लेना, है ना। ये टर्बो सी में भी रन होगा सभी जगह। मैं आपको ये लिख के दे देता हूँ, vi loc.c. नाउ loc इज लाइन ऑफ कंट्रोल। व्हाट इज दिस? सो बेहतर है कि मैं यहाँ पर क्या कर दूं, एक कमेंट लिख दूं कि दिस प्रोग्राम, सो हाउ डू आई राइट कमेंट? This program finds location of variable A, B, C, D, sum, and also gives the sum of A, B, C and D to, और ये मैंने यहाँ पर कमेंट ऐड कर दिया। अब मैं जब भी इस प्रोग्राम को पढ़ूंगा तो समझ में आएगा नहीं ये लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, ये प्रोग्राम तो इसके लिए लिखा है। अब आप नीचे की लाइंस जो है, एक प्रिंटफ या 2 प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख के बाकी के आप क्या करो कि 6-7 वेरिएबल ले लो, 10 वेरिएबल ले लो और उसके बाद उसको चेक कर लो। ठीक है? ओके सर। सो कोई डाउट है इसमें? अब किसी और को कोई डाउट नहीं है? बाकी सबको समझ में आ रहा? शोज, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? राजवीर, वागीश, उमेश? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so better to write a program for finding
some other addresses also. So %x will find the addresses. Okay. Okay, sir. So I think this is sufficient for today's, and I will go. This is our variable. Okay. So after that, I will put one blank space, and I will start from here. Let me write C section. सर मैम वो कर रहे थे, कॉल कर रहे थे। क्या चीज, क्या बोला आपने?